this seminar is also, this webinar is also related to the very brief introduction of the generally the course I teach also on the BIM Park, or also we have the graduate diploma in which I teach that, and also we are giving the some certification. So this is something similar. Of course, this is a brief overview. So in the class, I like to have one-to-one discussion. It's a webinar. So आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो रख सकते हैं माइंड में, ठीक है? आफ्टर आई फिनिश दिस ओवरव्यू देन वी कैन हैव अ डिस्कशन अबाउट इट, राइट? और अगर कहीं मेरा कनेक्शन लॉस टू एनीवन, प्लीज यू कैन इंटरप्ट मी, राइट? और आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल. ओके, सो today's webinar is about artificial intelligence in construction industry, right? So before starting to that, I want to make a connection to that, because now when we talk about the artificial intelligence or robotics, generally when we were also students in Pakistan or undergrad, we always think, okay, this is something related to the computer or computer industry, right? But it's not that, right? So today the world has changed. So it's something similar कि जब हम लोग अपने सीनियर्स को देखते थे, when I was even working in SPARC, okay, before I will go to my introduction as well after that. So 1990s में जिसने एक्सेल सीख लिया, पावर पॉइंट सीख लिया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लिया, today they are at the highest positions, because this has become a part of our daily routine and daily businesses and the daily our office jobs, right? So similarly, this is what the AI is going to the part in future, right? So my name is Dr. Abubakar Sharafat, and I'm currently working as a research professor, Intelligent Construction Automation Center in South Korea. Right? It's a part of a university, so I also teach, but I want to be more focused on the research. So my major focus is on the research and development. Moving to next, this is my brief overview of my profile. So I have a PhD majoring in construction engineering and management, which is most of my focus area was related to BIM information modeling, digital twin, automation in construction, construction management, tunnel construction and management, right? Uh, Generally, if you even talking about BIM or automation in construction or construction management or any type of a modern management of construction industry, most of this has been done through soon with the AI or the smart, even today, when we talk about the drones, they are processing the data through the AI, right? So I have been graduated from UET, then I worked in NESPAC as well, and then I did my PhD from South Korea. I also worked as an assistant professor in NUST, and then later I did my postdoctorate degree as well from the same university where I'm working as a research professor. I have been also engaged in international forums like Asian Development Bank or also UNDP program, a couple of things. So I have been like, overall both sides as well. Okay, right? So this was my overall introduction. So currently right now, when I'm working as a research professor, so we are working on the smart construction where we use a lot of AI applications for project management and control. When we talk about control, it means robotics, and robotics is controlled somehow through the AI, right? ठीक है? Okay, because it's not something हर इंसान को किसी ना किसी पॉइंट पे सीखना पड़ता है, right? So maybe आपको कुछ सी चीजें लगेंगी कि this is not a future, right? Right now, the America is almost 15 years ahead of Pakistan. Okay, Korea is almost 10 years ahead of Pakistan. Germany is also something around, right? सो आज अगर आप बिम की बात कर रहे हैं तो इन कंट्रीज में 10 से 15 साल पहले बिम की बात हो रही थी, राइट? सो सिमिलरली अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू अडॉप्ट दैट these things which become the international practice, right? So moving on to that, first let me very in a brief word or आसान अल्फाज में I will try to explain you what is artificial intelligence, right? अगर मैं आपको बड़ी आसान बात बताऊं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is not some very rocket science, right? It's a computing, but it's a very advanced form of all the basic engineerings, which is based on mathematics. So this is very advanced form of statistics. This is very advanced form of all the mathematics. This is all
This is what we have learned even in our undergraduate course, right? Even the computers are very advanced form of the basic engineering mechanics. So we use this advanced statistics, advanced engineering knowledge, where we try to develop the machines that have the ability to think and respond like a humans, right? Where we are trying to give them the ability to act on their own, right? Why we want to do that? Because we believe that the machines do better, right? Than people. Like अगर हम लोग देखें तो इंसान still is better, is better to creating new things, right? But machines are always better to do the repetitive tasks, and they have high computing, right? So when we talk about the AI, right? So there are different types of AI right now. We have the artificial super intelligence, we have the artificial general intelligence, artificial narrow intelligence, right? Even we are talking about the generative AI, right? So based on that, आपने सुना होगा machine learning, knowledge based system, computer vision, robotics, natural processing language, right? And optimization. These are the basic components of AI, right? So इसमें हम लोग ने just machines को train करना है, and then we will allow them to respond to that, right? इसकी एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है, लाइक ठीक है, आप एक्सेल के अंदर भी आप अपना कोई फार्मूला बना सकते हैं, देन यू गिव हिम द इनपुट एंड इट विल रिस्पॉन्ड यू द आंसर्स। अगर हम मशीन्स को इतना ज़्यादा इक्विप कर दें एंड एबिलिटी दे दें दैट दे अंडरस्टैंड हाउ टू पास थ्रू दिट एवरीथिंग, राइट? सो ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है एआई की, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू दैट, then AI के अंदर भी different levels हैं, right? So for example, purpose क्या है AI का? As we have discussed before, what is the purpose of AI, right? So the purpose of AI is to simulate the human intelligence, right? So considering that, अब इसके भी different level है। हम लोग जब machine learning की बात करते हैं, it's a very generic और broad perspective. सुपरवाइज लर्निंग हो सकती है हमारे पास, अनसुपरवाइज लर्निंग हो सकती है हमारे पास, री लर्निंग हो सकती है, राइट? तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स है जो कि बने हुए हैं। बेस्ड ऑन दैट एल्गोरिदम्स देयर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, सो यू हैव लर्न अबाउट के CNN है, RNN है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ developed algorithm, right? As a construction engineer or a civil engineer, maybe in future you don't need to develop these algorithms. These are already developed algorithms. You should know how to utilize them. It's similar कि आज आप एक्सेल को इन्वेंट नहीं कर रहे, आप एक्सेल की कोडिंग नहीं कर रहे, but you should know that how to use that, right? Okay. सो अब कंप्यूटर विजन आ जाती है। कंप्यूटर विजन के अंदर ये होता है कि हमने कंप्यूटर्स को इवन सो मच इक्विप्ड कर दिया कि दे कैन प्रोसेस द इमेजेस, ओके? बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग द इमेजेस दे कैन मेक देयर ओन डिसीजंस, राइट? देन machine learning is also related to automation, robotics, like for example लेग्ड रोबोट्स आ गए, UAVs आ गए इवन। अब ड्रोन से जो हम लोग मैपिंग करते हैं और जो ड्रोन का सर्वे, अल्टीमेटली देयर इज एल्गोरिदम बिहाइंड दैट, राइट? सो एक एल्गोरिदम है जो उनकी इमेजेस की प्रोसेसिंग करता है, इमेजेस की प्रोसेसिंग करके इट मेक अ पॉइंट क्लाउड, राइट? So there's this is a basic overview of that, right? So अगर हम मेन थ्री पार्ट्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन ऑफ मशीन लर्निंग करें, राइट? सो सुपरवाइज लर्निंग में व्हाट वी डू, लाइक वी लेबल द डाटा, we train the computer, and then we develop one model, right? When we develop one model, then you can give him something similar input। जिस तरह का आपने डाटा लेबल किया है, you give the similar input to that data, and then it can give you the predicted output, right? It is, if I go to very basics, like it is something related to algebra, right? Or where one of the variables and you want to predict the other variable. But here
अगर मैं आपको आपको 3 or 4 variables की इक्वेशन सॉल्व करने को दूं, it will take a time. But AI have the ability where it can solve, you know, n number of variables. Of course, the computing will increase. 20 variables, 30 variables, unknown variables. It can compute and make a decision because there is some pattern behind that, right? Okay, in case of unsupervised learning, we provide the raw data, it do the training, and it makes a machine learning model, and it predicts the results, you know, based on the real time. So it's training and it is unsupervised learning, right? So because it has some type of data behind it already. Then reinforcement learning, right? So in which we input the raw data, and then there is a environment where we have the best agent and we have the states of the different algorithm. This is happening inside the machine model, right? So, and then we have the predicted output. So right now, of course, this is, I teach very much detail when we are having our own, my own course, or when we are having the skill diploma, like or like a 10 weeks course, so we go very detail in that, right? Of course, we need to know the basic knowledge of computer. And आज के दौर में programming is not a big issue. We have a lot of computers that can help us with programming, right? um Considering our construction industry, right? Why we need artificial intelligence, right? Because in construction industry, the productivity is still a big issue. It's one of the industry which has very low productivity, right? So, so to solve these kind of issues, we can have image captioning, image classification, active recognition, object detection and tracking, enhancement argument, and improve the model accuracy, So these kind of algorithms, can help us to improve the productivity in our construction industry, right? So later I have also other examples for that, right? So, okay, so we have that. Okay, so let me see that. Okay, so I think, okay, annotate. Okay, so Sakib साहब ने पता नहीं कौन सा annotation किया, so I am na, okay, I am going to hide the, okay, so let me see how we can, hmm, okay, so moving back, okay, so this was we are talking about it, right? So I hope in the first like a couple of minutes I try to make you understand what is artificial intelligence, right? So now I will go through quickly that why we need it, right? Actually, the research is the basis for anything. If there is a lot of research going on, it means that this thing is becoming a part of our life. So in the last 10 years, there's a lot of research which is going on in that field. Today, everything you are having around, somehow you are using the AI. For example, even this like we use Apple, right? Okay, iPhone or mobile phones, they are using somehow the AI. Even Samsung is using its AI. So it recognizes my face and it unlocks, the iPhone. So even they are using the AI, right? Uh, they know that who is that person. So the AI is becoming a part of our life. So similarly, the AI has also become the the part of the construction industry, right? So why we need it, like once I told you, the most important thing is as the population is growing,
there is more interest of developing more infrastructure, and the productivity is low, so everyone wants to make more profit. And also in developed countries, there's very hard to find the hard labor, and this is becoming an aging population. So, and also this is a trend since the human evolution has started, that the nature of job is changing, right? For example, today we are using the excavator to do the excavation. Before that, the people were using the manual shovels to do that. So there was a mechanical revolution. Now we are moving towards the digital revolution, right? So I will go very briefly overview of some of the major applications in construction industry. uh, Computer vision or artificial intelligence is making the sites more safer, right? So there are a lot of studies, and this is already implemented in the construction industries, where live streams from the CCTVs are used to inspect that either the construction workers are wearing the head helmets or safety vests or something like that, right? So if we go in more detail, so we have there are different applications like equipment detection and tracking, which can help us for the safety, which I told you. Asset management and maintenance, like how much asset you have used and how it is coming. And the quality control, dangerous sign goods recognition, measuring the volume and distance, digital analog conversion. Now this is very also important. Processing, outdoor indoor mapping, 3D scanning, construction vehicle identification, productivity measurement, So how even the management of your workforce. For example, look at this, that personal protective. So if you see this, so it can tell us that if we have the CCTV and we're using the AI, so अगर आपका जो safety manager है, he can make the safety 100% uh, like safe for the construction environment. So as a head of the project, you never want your work to stop, and of course such kind of accidents can really stop the work. ठीक है? तो आप अगर आप इस पिक्चर को देखें, so it is telling you, okay, there 0.99 means that, okay, 99% probability by the algorithm that he's wearing the vest, helmet है, okay, he's a person, he's a human, and similar this. So अगर तो हम लोग एक कोड के अंदर अलार्म लगा देंगे, if we put alarm, तो हम लोग को पता लग जाएगा that some person not using that PPE, because हर प्रोजेक्ट के ऊपर we cannot spend too much time on the too much personal only on HSC, right? And this is most of the accident happens in the construction industry, I because of personal protective equipment or the wrong practices, right? So construction equipment detection or tracking is one of the very important, right? One another example, we can measure the productivity even, that how our work is going, and even we know that how the people are working on site, right? So for example, this is one of the algorithms that you use to that how many resources we have, right? Resource management, like we know that, okay, this person is doing 78% of productivity, this is 0.6% productivity. So for example, if we know that, okay, if our productivity is going beyond some specific point, so we need that, okay, we need to remove these persons or how many people we need at the site, right? Automated quality control, right? Even if there are some defects in our, like small defects, even the defects in the bridges, the crack detection. All right, for example, it can tell us, okay, if these are the small screws, it can tell us, okay, which components are defected, even we buy something for our construction purpose. Again, the dangerous goods and sign recognition. For example, if we have AI on our site, and if any of this, any of the explosives or any of the dangerous materials or inflammables enter our site, so we know that, okay, what kind of there's an entrance of some kind of material which is can be hazardous, and we can do the real-time monitoring, and we can make our site more safe. Okay, again, what I told you, like automated inspection with AI. This is one of the very big applications recently. Like आप जो आपके steel bridges, right? So you just pass through a
camera or robot with a camera, and it can tell you like, okay, where we have a deflection, we have uh, a defect. Even on the railway tracks, they are doing that, right? So there is corrosion, so it can detect you, okay, there is 89% probability that it has a corrosion, so we don't need to scan that. So later the human can go and see that, and we can do the repair in that part. And then the process optimization and tracking, right? Again, the productivity, like how we are doing the productivity. So measuring our productivity in the real time using the AI is very important, that we know that, okay, and we can optimize our equipment, right? That how many excavator or dump trucks are needed. This is also a very interesting part, that even we can use our old systems and we can use AI to make our analog data to convert it into digital data, and then based on that we can ask some values to trigger some alarms, right? For example, if we say that, okay, this is some kind of a voltage gauge, okay, it is showing like the 45-degree, we can put that, okay, if the value goes up 50, trip the system. So we can have these old, you know, because some of the analog technologies are really good. So we can convert into digital technologies to have some kind of a checks on that, right? Flow meter, dial indicators, even we don't need to move into the new sensors or new that. So even our AI can convert to these. Um, Again, the distance measurement. Okay, for example, you can use drone, then where you can calculate the productivity of every day, or you can know the number of loaded material in a number of dump trucks during the construction projects, right? Uh, Again, it's not only limited to that. For example, if we do the 3D scanning of a project, right? So there are a lot of things. Maybe if you want to put one pipeline, a sewer pipeline here, and you want to do the trenching project here. So we have a lot of the objects which are not our point of interest. So it can automatically change into the layers. I remember जब हमने point cloud 2015, 16, 17 में we were get introduced to that when we were PhD students. तो क्या था, हम लोग को मैनुअली पॉइंट क्लाउड्स हम लेबलिंग करते होते कि ये ट्री है, ये है, ताकि हम लोग बाद में लेयर्स को कंबाइन कर सकें. नाउ इट इज ट्रेंड. आपको आप सिर्फ एक चेक करेंगे, इट कैन शो यू वट एवर. For example, the curve geometry, so it can curve points, you can turn on whatever you want. So this is called the segmentation, so computers can do by their own. Outdoor and indoor mappings, right? So we can have a lot of even indoor positioning modules, and we know that a lot of, for example, feature detection algorithms can identify such as images, corners, tracking algorithms जो आपकी movement को track कर सकते हैं, including that. So there's a lot of, like, for example, you can also do the real using the simple camera. So using the simple RGB camera, we have developed the algorithm. Like there are a lot of, for example, NDT SLAM algorithm, right? There's algorithm which can help you, to understand that uh, to make a 3D model of your environment around. Safety and security monitoring, right? Recently when you saw this a cricket series in Australia and India, right? They were showing this human pose estimation in real time, right? They were showing from the perspective of the cricket, right? And this has been researched, has been done around 2010 about this in the construction industry, right? So बेस्ड ऑन द ह्यूमन पोज हम लोग ह्यूमन ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं. हम ह्यूमन की कि क्या वो जो काम कर रहे, इट इज़ गुड इनफ फॉर देयर हेल्थ और सेफ्टी. देयर इज अ स्पेशल कोर्स फॉर दैट कि what actions they should do to improve their life, and also what is safe using this kind of a uh, directly pose estimation, right? Then even using the AI, we can know that, okay, we can demarcate, okay, which kind of a dangerous zones in our area, and if we see that any human who is getting close to that, we can have alarm or something like that, right? So we can have a danger zone alert using the camera,
right? So this is like a material management with AI vision. It can tell us, okay, where's our insulation, where's waterproofing, cladding. So vision-based material recognition for automated monitoring, right? So while it is working, right? Number of people working in counter. So we have the intelligent workforce management. Okay, there are three different kind of people working at that moment, what kind of activity is happening. So and how is their productivity. Defect of structure defects, if there's a cracks in the wall, non-cracked, cracked and non-cracked, and similarly infrastructure inspection with computer vision, it can tell us that what kind of, for example, it shows us that there are the concrete cracks, concrete spelling, steel corrosion, asphalt cracks. So these different kind of defects, our AI can have it. So we don't need to like go in very detail. We have the reports to have that. Construction vehicle identification and management, right? For example, you want to count that how many dump trucks have left the site, entered the site, and by comparing their generic volume, you can calculate your productivity as well, right? So we can there's called the NPR, number plate recognition for automatic vehicle identification. This is also one of the very important things. Right, recently I have also published a research in that where we have done for the productivity measurement using this kind of algorithms. Then bricklaying robots. Then there is like a bricklaying robots. Again, unko under we have this kind of intake in which we can have it, right? We can. So it is. These are also based on the AI, right? Demolition robot, welding robot. So we have the BIM models, and then of course the BIM models need to understand by something. This is AI, right? Okay. So now let me concluding the today's session, because it's like a very quick overview to make you understand what is AI and how we have it. So I basically give a overview. So for the 3D mapping of the sites, right? It is very important that we should know that AI is helping that. Smarter security surveillance. AI is helping in today's construction industry, improving the quality inspection, right? So we can use the AI computer vision, right? The most important in the future thing what we are looking around is the smart building cities, right? We are talking about the smart buildings, even the neon project, even the Murabba project, even Dubai, even Korea is having a Sejong city. Even the old cities are trying to become a more smart cities, right? So when we are talking about the smart cities, so it means that is somehow everything is related through using the data, and data is managed through the AI and artificial intelligence, right? Okay. So what looking at this, right? Now, when you are today, you are thinking, okay, I have a graduate degree in civil engineering, right? It will remain the same, right? For example, if someone has a graduate degree of civil engineering 1960s, that was similar, the same what you have it today. You have today a graduate degree in geological engineering. Today you have a engineering degree in architectural engineering, right? You have a degree in some like all these environmental engineering, right? Mechanical engineering, right? Even in my course, there are also mechanical engineers who are taking the course because now the degree, the hardcore engineering remains the same. That's the base for that. But in 1990s, the computer was becoming a part of their jobs. But the people who adopted that, they had better opportunities and they went ahead. Similarly, this is a time where the hardcore engineering should be linked with the smart robotics, cloud AR, VR, IoTs, in which include a smart sensor, GPS, RFIDs, right? So why we want these all technologies? Because now the industry 4.0 and the AI techniques will together introduce a new industry which will call the industry 5.0, which will be leading to digital twins, 4D printing, and blockchain, which will together run and drive the future of the construction industry. With taking our hardcore knowledge will be there, right? Can you imagine someone say that, oh, I don't know how to use a computer, and he can be still a good civil engineer? No, because he cannot communicate with anything, right?
So similarly, after 10 year to 15 years, it will become a big part, because this is what keeps keeping the construction industry, uh, the price will go down, because otherwise, how we are having how the world works, how the economics work, the inflation cost and the cost of the labor is always going up. So that's why we go up to improve the productivity, right? So, and construction industry is one of the biggest industries, like 3 to 4% of the global economy is spent in construction industries. And now, uh, like almost everything is related to the technology. Um, Maybe the AI is becoming a major part in all kind of engineering, right? So this was the today's webinar, where we discuss about the basics of AI and how it is going to link with that, in our construction industry. So before we move into question answers, of course, we can move into, and because you have been advertised through that why we need it. So I give a brief overview of that, right? So now the mic is open. If someone want to have a healthy discussion, for sure. So I always welcome that. And if you have any question, you're most welcome. Sir, I have two questions. First of Go all, ahead, for sure. do we need to learn any type of coding, or as we do in Dynamo? So, because as I feel like I'm not good in languages like Python or some type of languages. And other question is, as if I am relying on standalone versions, I don't have like a private or some type of student ID, so I'm purely relying on the standalone versions. So Yeah. is this possible on these type of versions, or do I need to buy a heavy system? Because when I use Revit on my computer, so I feel frustration because all the time uh, I have to utilize lot of time on it, because जो system जो होता है वो बिल्कुल जो है ना वो काम नहीं करता. I feel stuck there. So do I need to invest on my system, or what type of investment and outline of this course? Thank you so much. Okay, very good. Okay, so very good question. So सबसे पहली चीज ये है कि अ, अगर मैं वही एग्जांपल को लेकर चलता हूँ, इन 1996 1994, अगर आपको एक्सेल में काम करना था, आपको कोडिंग आनी चाहिए, बिकॉज आप एक कोड रन करते थे। उसके पीछे विंडोज 1995 में आई है, तो आप एक कोडिंग करते थे, आप एक कोड बनाते थे, वो स्पेसिफिक कोड आपके एक स्पेशल के, इवन आपने अपना डाटा एंटर करना होता था, यू डू दैट, राइट? सो अब क्या हो गया, आप एक्सेल के अंदर क्या करते हैं, यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड यू नीड द बेसिक थिंकिंग, राइट? I know आपका कोडिंग का जीरो नॉलेज है, it doesn't matter now, right? So there are even the softwares, right? Even I teach Python. I will teaching two softwares. Even I will teaching the Python, and you have a zero knowledge of coding, you will code in the second day, right? सो बिकॉज अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिसके अंदर हमारे पास एल्गोरिज्म ऑलरेडी है, वी हैव द लाइब्रेरीज एंड यू कैन डू दैट। इवन लास्ट कोड आई स्टार्टेड दिस 1 ईयर बिफोर, उससे पहले मैं नहीं करवाता था कोडिंग वाला काम, बिकॉज इट वाज नॉट दैट यूजर फ्रेंडली, राइट? अब हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप कोड कंप्यूटर को, यू राइट अ प्रॉम्प्ट, राइट? आप कंप्यूटर को प्रॉम्प्ट लिख के देते हैं, इट कैन राइट अ कोड फॉर यू, राइट? इस सिमिलरली, राइट, कि पहले आप एक्सेल के लिए पूरा एक कोड लिखते थे, अब आपको करना पड़ता है। सेकेंडली, regarding that, investing in a computer, no, you don't need to, because आप हम लोग जब सीखेंगे, it's a learning process, right? For example, if I am doing something high computing, right, so I have a super computer in my office, right? But हम लोग ने तो लर्न करना है ना, राइट? तो हम डाटा को कम भी कर सकते हैं। सो इन स्पेसिफिकली जो बेसिक कंप्यूटर है, 4 GB 8 GB रैम के साथ, ऑफ कोर्स इट वर्क्स ऑन द जीपीयू जनरली, अगर हम विजन बेस में चले जाते हैं। पर बेसिक लर्निंग के लिए, अगर आपने बेसिक लर्निंग करनी है, वी डोंट नीड टू गिव हिम द 1000 और 1 million इमेजेस, राइट? हम लोग सिर्फ 300 200 इमेजेस दे के हम कर सकते हैं। रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज लास्ट जो मेरा कोर्स था उसके अंदर, जो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट रेगुलर लाइक डिप्लोमा कोर्स, ग्रेजुएट डिप्लोमा, बिकॉज ओके इन साउथ कोरिया दे हैव अ नॉलेज ऑफ लाइक प्रोग्रामिंग दैट। तो लास्ट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया पाइथन। इवन
देयर आर ऑल ऑफ दीज आर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, उनको कंप्यूटिंग और कोडिंग का कोई नहीं पता था। दे लर्न हाउ टू कोड इट। सो कोड का मतलब ये नहीं है कि वो कोडिंग कर रहे हैं, दे नो द टूल्स कि जहाँ पे हम लोग कोड प्रॉम्प्ट से हम लोग कोड लिख सकते हैं। वी हैव जस्ट बेसिक नॉलेज कि हमने डाटा कहाँ पे रखा है, वो क्या रखा है, एंड एवरीवन हैज डन देयर प्रोजेक्ट, राइट? सो दिस इज दैट। जी And oh, सर। sorry. So sorry, before we move ahead, I got to one more thing, like because I will be the instructor of that course, so keeping like okay the questions and your interest. So I think if anyone want like okay, you will have this will have that attendance, and anyone want to join this, what was that, the professional development course, what is the 10 weeks, or sorry 8 weeks, so you will get the 20% discount. Okay, you will just tell Kamran, okay, you just tell okay we were present there, and he will, you know, who is our coordinator for that. So all of you who were like listening for me, at least अगर आप लोगों ने मुझे सुना तो you get some benefit. So it is like that. और before moving on to that, the course content will be कि हम लोग sorry आपका next question लेता हूँ, वो course content वाला रह गया. We will learn basic about the Python. There is a software called Vika जो कि बिल्कुल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और वो तो आप 2 GB रैम वाले कंप्यूटर पे रन कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। डेटाबेस को डिज़ाइन कैसे करते हैं वो हम करेंगे। फिर इन कंप्यूटर की एप्लीकेशंस जो हमने पढ़ी हैं, इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कहाँ पे हो रही हैं, हम उनको देखेंगे। और लास्ट में यू विल हैव अ, आपको मैं एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा, एंड वी विल लर्न इट, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल हैव अ प्रोजेक्ट एज योर सबमिशन, राइट? सो दिस विल बी लाइक दैट। आई होप माय क्वेश्चन इज आंसर्ड, लाइक जिन्होंने भी पूछा था, राइट? सॉरी, उमेरा, उमेरा बच्चा आपने पूछा था, यू हैव बीन क्वेश्चन बीन आंसर्ड, राइट? नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, जी जी। it's a very good thing that BIMPOG is always coming up with new ideas and new courses. तो it's a very good platform कि हमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं. Now coming to the question, because I have been out of this study for like maybe 16 17 years now, because I'm working in the field. तो जी जी। अब जो मैंने एक प्रोग्रामिंग कोडिंग, ओके, एक चीज है कि एक कोड को किसी चीज को लिख देना या कंप्यूटर में डाल देना, बट प्रोग्रामिंग इटसेल्फ इज अ, मेरे मतलब फॉर अ बिगनर्स व्हाट डू यू सजेस्ट कि प्रोग्रामिंग इट्स अ वेरी सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज चीज है, तो क्या इट विल बी बेनिफिशियल जिनको बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग या कोई भी किसी किस्म की कोडिंग नहीं आती? कोडिंग आप मेरे पे छोड़ दें, इफ यू हैव ओके। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आई एम ऑल्सो PhD इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट? मैंने भी बचपन से कोडिंग नहीं पढ़ी, राइट? असल में ना हम लोगों को ना डरा दिया जाता है पाकिस्तान में अंडर ग्रेड से, ये जो हम लोग कोडिंग पढ़ाई भी जाती है ना, हम C++ पढ़ते हैं, दिस इज लाइक अ वे बिहाइंड, यू नो। अब आप मैटलैब इंस्टॉल करें, उसके अंदर बिल्ट इन कोड्स आते हैं, राइट? आप मेरे पास आ जाए, मैं से बता रहा हूँ, आप मेरे पास आ जाए, आई विल, आप अगर आपका बेसिक नॉलेज है ना, कोडिंग का जीरो नॉलेज है, राइट, यू हैव अ बेसिक नॉलेज, we will sit together in 25 minutes, what code you will apply that code in Python. This is what I'm telling you. Coding is not anymore a problem. Coding वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं कर सकेंगे देन मैं जिम्मेदार हूँ, उसकी मेरी गारंटी है। बट लेकिन ऑफ कोर्स इफ यू नीड टू नो द प्रोसेस, राइट? ठीक हो गया? कौन थे, कौन सा आप थे, फवाद साहब आप थे? नहीं सर, सुहेब है, मैंने आपसे सर। सोएब, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो आपका 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अगर आप इस चीज़ को लर्न करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपको पता है फ्यूचर में बिम और ये चीज़ें हैं, तो आपको कोडिंग वाली चीज़ से आप परेशान ना हो। बेसिक वही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसमें भी मेन चीज़ पता क्या है, व्हाट इज अ डेटाबेस, आपने कौन सी एप्लीकेशन करनी है। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं है ना, आप AI में भी जीरो है। सो बेसिकली वी नीड मोर स्ट्रॉन्ग नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, वेयर यू नो दैट आपके पास डाटा किस तरह का चाहिए आपको, विच इज बेस्ड ऑन योर सिविल इंजीनियरिंग इनपुट, ठीक है? फिर उसकी बेस पे आप रिजल्ट्स कर, फॉर एग्जांपल आपने क्रैक डिटेक्शन करनी है, राइट? अब क्रैक डिटेक्शन के लिए अगर कंप्यूटर को कौन बताएगा व्हाट काइंड ऑफ क्रैक दिस इज, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए दिस इज व्हाई वी नीड इट, वरना कंप्यूटर इंजीनियर्स ना कर लें सारा कुछ। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, ठीक है? आप उस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, एनीवन हु इज राइट नाउ हियर, आप लोग कोडिंग वाले पॉइंट से हो जाएं, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। वन लेक्चर यू विल बी एबल टू कोड एवरीथिंग रिलेटेड टू AI, ठीक है? सही हो गया शेप साहब?
जी सर, आई गॉट इट। बस समझ गया हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके साथ एक दो क्लासेस अटेंड करेंगे। अगर होपफुली हमारे ब्रेन्स विल एक्सेप्ट इट, देन इट विल बी अ गुड एडवेंचर विद यू। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखिए एक चीज होती है, दिस वाज मोर लाइक अ वेबिनार। अदरवाइज क्लासेस आई रियली वांट टू इंटरेक्टिव, लाइक ऑफ कोर्स आई हैव नो एक्सपीरियंस टीचिंग इन पाकिस्तान। मैं नस्ट में था, यहाँ पे भी आई विल टेक अ ग्रेजुएट स्कूल को पढ़ाता हूँ, पीएचडी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। आई वांट टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, इट्स मोर लाइक इंटरेक्शन, वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। ये अब इट्स नॉट अंडरग्रेड में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश है। अभी आई एम वर्किंग विद ऑल्सो विद डॉक्टर वकास साहब। हम लोग कुछ चीज़ों पे और काम कर रहे हैं कि अभी जिस तरह मैं एक चीज़ पे सोच रहा हूँ, बिकॉज टनलिंग इज़ वेरी बिग इंडस्ट्री, और हम पाकिस्तान में हमारा बड़ा काम इस चीज़ पे। तो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन समथिंग लाइक दैट, कि हम लोग टनल बिम के, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग आई वर्किंग ऑन। हमारा मेरा बिम पाक का, डॉक्टर वकास साहब का, हमारा मेन एम ही ये है कि हाउ मच, कि हम लोग किसी तरह जो है ना ट्राई करें इम्प्रूव करने की अपने वर्कफोर्स पे, जिसमें हमारे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज आए। ठीक है, बिम पाक के थ्रू माशाल्लाह लोगों के रिस्क तो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, पर लेकिन इसके थ्रू कितने लोग हैं जिनको सर्टिफिकेशन मिलती है, दे वेंट आउट, दे आर वर्किंग अब्रॉड। अल्टीमेटली हमारे पास, आपको पता है जो हालात हैं हमारे इस वक्त चल रहे हैं सारे। ठीक हो गया। नाइस टू टॉकिंग टू यू शेफ साहब। इंशाल्लाह सर लेट्स सी ये हाउ कुछ इट लोग गोस। टेक्स्ट में भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जरा काइंडली वहाँ भी रीड कर लें। ओके फॉर श्योर। ओके। सलामकुम सर। जी जी। पहले मैं वर्ड, ये जो वर्बल कर इनको करके एंड पे फिर मैं टेक्स्ट वाले भी देख लेता हूँ सारे। जी जी फॉर श्योर। सलामकुम सर। जी जी। सर मैं सर एपीसी मेरी क्वालिफिकेशन है सर, तो क्या मैं सर कोडिंग कर सकता हूँ या मेरे लिए अच्छा रहेगा कोडिंग सर? आपके लिए भी करेगा। कोडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश आती है ना, आप कोडिंग कर सकते हैं, ये छोड़ दें बस। इफ यू नो इंग्लिश, आप कोडिंग कर सर सकते इंग्लिश हैं में भी क्योंकि मैं कमजोर हूँ ना क्या, सर, इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती, इंग्लिश भी अच्छी नहीं आती है सर। कितनी इंग्लिश अच्छी है? इतनी इंग्लिश अच्छी है कि सर सिविल इंजीनियरिंग का काम कर लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग सर 0% है, मेरा 0% टच किया है सिविल इंजीनियरिंग। ये देखिए ना, बेसिकली वही बात है। देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग का मेन होना चाहिए। अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग वीक, वीक का मतलब ये देखें, फॉर एग्जांपल, अगर आपको तरजागी इक्वेशन इंप्लीमेंट नहीं करनी आती ना, तो आपको एआई भी इंप्लीमेंट नहीं करना आएगा, राइट? कोडिंग पार्ट को छोड़ दें मेरे, यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, समझ आ रही है बात की? देखिए तरजागी इक्वेशन अल्टीमेटली व्हाट वी वांट टू गेट, वी वांट टू गेट अ नंबर, राइट? सो दिस इज यस बेस्ड सर। ऑन वेरी लिमिटेड, दिस इज बेस्ड ऑन सम वेरिएबल्स, राइट? हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, राइट, व्हाट टू गेट द आउटपुट। सही है। सो वो सही है। सिमिलर है। ठीक है। सो आप बेसिकली ओके। देर इज अ प्रॉम्प्ट, हम लोग प्रॉम्प्ट लिख के कोड जनरेट करते हैं, जो कोड में एरर आते हैं वी नो हाउ टू फिक्स दैट। और प्रोग्रामिंग और कोडिंग इज नॉट अ बिग इशू इन टुडेज वर्ल्ड फॉर एआई, आई एम टॉकिंग अबाउट द एआई। ठीक है। यस सर, तो मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल करें, मैं तो रिकमेंड करूंगा। देखें आज आप कुछ टूल लर्न करते हैं ना, आज के दिन में आज आप कुछ लर्न करते हैं ना, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है। अब मैं अक्सर बात करता हूँ, मुझे नाम भूल जाता है उसका, मुझे नाम भूल जाता है अक्सर। हमारे साथ एक था, ही वॉज वेरी ब्राइट स्टूडेंट, हमारे पहले या दूसरे बैच का था जब मैं पढ़ा रहा था, राइट? अगेन यू शुड, मतलब ये कि मोस्ट जो प्रोफेसर, खास तौर पे मैं अपनी बात नहीं कर रहा अकेला, प्रोफेसर जो बाहर से आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, दे आर गिविंग अ बिग कंट्रीब्यूशन। वो सबका ये मेन इमेज होता है कि हम लोग जो है ना कंट्रीब्यूट करें बैक, यू नो बिकॉज यू नो दैट बाहर की लाइफ में, दूसरी चीज़ों में, हाउ मच दे आर लाइक रिगार्डेड हेयर। तो हमारा मेन पर्पज ये है कि जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, समहाउ वी वांट टू डिलीवर दैट, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा जो टिपिकल एकेडेमिया, हम लोग भी वहाँ से पढ़ के आए, हम लोग भी कोई यहाँ, मतलब ये मैंने कोई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से बैचलर तो नहीं किया होगा, राइट? सो व्हाट वी हैव फेस्ड हेयर। सो अगेन अगर कुछ लोग पीएचडी की तरफ देखना चाह रहे हैं, तो प्रोफेसर नो वांट टू नो अबाउट इट। फिर आप लोग किसी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि देखें, मैंने अपना प्रपोजल भेजा प्रोफेसर को, प्रोफेसर ये पूछा, सो यू शुड, अंटिल यू डोंट नो अबाउट, यू कैन नॉट हैंडल इट, राइट? सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कंसिडरिंग अगर आपको बेसिक नॉलेज है, आप उसका वो आप कर सकते हैं, राइट? ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके। सो अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जी मैकेनिकल जी। और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वालों के लिए कितना बेनिफिट है, मतलब इसके आप कहते हैं कि ओके, सिविल वालों के लिए ज्यादा सूटेबल है ये। देखिए सब इंजीनियरिंग के लिए, अगेन अगर आप हम्म। मैकेनिकल की बात करते हैं ना, मैकेनिकल, आई विल से दैट मैकेनिकल इज द मेन इंजीनियरिंग इज कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल, राइट? जी सर, यस करंटली सर। ठीक हो गया। एक्सकेवेटर इज व्हाट, ड्राइव फ्रॉम द यस यस मैकेनिकल सर। इंजीनियरिंग, यस। राइट? Somehow the civil engineers are implementing it, right? समझ रहे हैं? जी all जी। all the civil engineering tools somehow, what are bridges?
ब्रिजेस किस तरह अल्टीमेटली दे आर लिंक्ड विद समहाउ मैकेनिकल. सो जो डाटा है ना, इट इज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एवरीथिंग. इफ समवन इज कमिंग इन मैकेनिकल, अगर फॉर एग्जांपल मेरे साथ अभी मैकेनिकल का था, राइट. इफ यू टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल, सो आई आल्सो हैव अ प्रिविलेज टू वर्क ऑन द टनल बोरिंग मशीन व्हिच इज द बिगेस्ट मैकेनिकल मशीन, अगर आप हमारे साथ इस टर्म में बात करें ना, राइट. सो इट इज ऑल द इंजीनियरिंग, हमारी सारी इंजीनियरिंग अब लिंक्ड हो चुकी हैं. अब इंजीनियरिंग के अंदर भी आपका ये नहीं रह गया कि आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग सिविल इंजीनियरिंग अलग है. एवरीवन इज गोइंग ईच अदर डोमेन, राइट. सो जो एआई थी, इट वाज आल्सो स्टार्टेड वेरी 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 बेसिक्स फ्रॉम दैट, राइट. So for example, this is my research. So I have also research related to the mechanical applications, right? Like tunnel boring machines ka, how we can have that. Okay, for example, like uh, this one. Okay, digital twin for TBM performance. What is a TBM? TBM is like a tunnel boring machine, which is like a mechanical thing. It's a moving factory, right? Right. So most of like my recent, if you see like, okay, vision based, this is AI. Most of my recent research is related to that, right? BIM and all this stuff. Okay. So it is equally for everyone is equal. Okay. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्सक्वेटर की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वी शुड नीड टू हैव नो द नॉलेज ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वेल, राइट. बेसिक्स हमें पता होती हैं, और हम लोग को इसलिए वो पढ़ाया जाता है पहले 2 सालों में इंटरलिंक्ड, और हमें पता होता है, वी डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, हम सबको पता होता है. ठीक है, गुड हो गया. जी सर, शुक्रिया. ओके, सो लेट मी गो. अगर किसी और के क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो. ओके, सो we can also, let me go through the text questions. Okay. What will be the price? I think Kamran has announced, so I can, Kamran has announced or not yet. So वो आपको बिमपाक से पता लग जाएगा, पर approximately it will be something around 10 or 12,000, right? I have already said you कि जिसकी attendance होगी आज मेरे पास होगी, I will send it to Kamran. You will get 20% discount on that as well, right? ठीक हो गया. बाकी वकास साहब ने आपके साथ शेयर कर दिया. Yeah, it will be like, I think it will be very helpful for the architects as well. Again, architecture के लिए भी देखें, BIM जो है ना, for example, how you are going to do the real time in future. Like देखें, architects के लिए सबसे आपके लिए important क्या है? कल को as build को compare करना as design के साथ. This is also part of it, right? So generative AI is something which is going through more architects को जो future में कर सकता है. But again, first we need to know the basics about it, right? अगर आपका बिंग से ताल्लुक है, ऑफ कोर्स यू हैव द एआई के साथ ताल्लुक है. ठीक है. सो अगेन देखिए, एक चीज़ है, हमें अगर तो मैंने अगर तो कंप्यूटर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक कोर्स पढ़ा है ना, मैंने अगर एक कोर्स पढ़ लिया एआई का कंप्यूटर साइंस से, सो आई लर्न अबाउट कंप्यूटर साइंस, आई नीड टू नो हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इन दैट, राइट. सो आई इट इज इक्वली हेल्पफुल टू ऑल इंजीनियरिंग. मैंने पीछे कहा है, सो इट्स सिमिलरली हेल्पफुल टू आर्किटेक्ट. जितना आपके लिए बिम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली इतना ही एआई भी इंपॉर्टेंट है. Like mechanical, we have already talked about it. Okay. So Fawad Saab, aapka question kya tha? Sorry, Fawad. So for architects, right? For example, Fawad Saab, okay, because you asked me, sorry, I just went back to right now here. Okay. For example, considering that, let's go here, right? Mechanical, right? So for architects, right? So giving you the examples, okay? AI for आर्किटेक्ट. सो जब हमारा कोर्स हो जाता है ना फाइनल, हमें बैकग्राउंड पता लग जाता है कौन कौन किसका फील्ड क्या है. सो आई नो हाउ टू यू नो देन देयर you see there are the tools, like you can see 16 tools what the AI can help us. So there is a lot of things which can help the architects even, right. But you need to know the basics of AI. ठीक है, आपको पहले पता होना चाहिए कि AI काम कैसे करती है. Then of course there are hundreds of tools, right. So even you can calculate the quantities, like, okay, you see that visualization, rendering, project generative designs, these all things exist, right. Right. So there are a lot of things you can have it, like, okay, so even a lot of tools, then the tools can go later. First सबसे important चीज ये है कि आपको ये पता हो how to manage the data बनाना कैसे है. So same जो मेन चीज है इसमें, right.
So I think I tried to answer Fawad, Fawad, Fawad Alam Saab. Okay, 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 good. Duration of course, duration of course, eight sessions, 2 months, classes on Sunday afternoon or evening, right? If okay, still about this, because I will be taking the lectures, it will be Sunday afternoon, evening, or if someone who is having this कोर्स और उसका कंफ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि ये बिम्पाक से कंफ्लिक्ट इसलिए नहीं हो सकता इस कोर्स का बिकॉज आई विल बी टेकिंग दैट एंड आई विल नॉट वांट बी अवेलेबल दैट अदर सेशन दैट राइट अगर मैं अब यहाँ पे हूँगा तो आई वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर बिम्पाक सो आपको वो विंडो फ्री होगी वो वाली विंडो में बिम्पाक का कोई और कोर्स नहीं हो रहा होगा आई कैन मेक श्योर राइट अब समवन वरीड अबाउट दैट कि वो हम लोग और कोर्स ले रहे हैं आपका इस कोर्स का किसी के साथ ओवरलैप नहीं होगा आई कैन मेक श्योर अगर ओवरलैप होगा यू कैन कॉन्टेक्ट मी आई कैन मैनेज डोंट वरी अबाउट दैट ठीक हो गया right any more questions okay now before we move on so maybe okay so let's see some of the things like this is my profile which it is related to recent applications of AI and all this stuff so for example if we go to that okay my recent in 2024 where this is one of with my I'm co-advising a PhD student from China so look at this automatic vision based dumped up productivity based on the deep learning enhancement algorithm for construction environment, right? So again, so these kind of things are very important. Like, no, you need to know that how the things are happening behind, right? सही So I hope I try to answer all of your questions. So अगर still किसी का question है most welcome देखें जरूरी नहीं है आप कोर्स ले ना लें okay if still you have something in your mind go ahead गलत पूछेंगे कोई मसला नहीं है right कल को ये मैं आपको बता रहा हूँ कि AI, BIM, data informatics, right? Now even I believe so that in future we will talking about the advanced BIM and all these stuff, right? So this will become a part of your construction industry, right? So if you have time, then go ahead, right? Okay, so if you have no more questions, and then this is all from my side. Furthermore, if you want you know more about the registration, there the link is shared by the BIM Park in that because of course they will be managing that. So I will be more like an instructor. So you can contact them or you can contact the coordinator. He like a coordinator for that. He's Kamran. So you can contact him directly, right? And if you want to know about the more detail of the course, he can also share with that. But in brief, I can tell you, we will learn about the introduction of the we will learn about what is the introduction of that and then we can we will go in detail about this database design then we will go in detail about the its application in construction industry and how we can use it then we will learn about one software which is called the Vika ओके एंड इट्स वेरी फ्री वर्जन ये आपको ये बेसिकली ये आपको जरूरत नहीं है वो क्रैक वगैरह की इट्स अ फ्री वर्जन वी विल डू द वीका right? Vika for AI, we will do Vika. This is like a Vika for AI. This is from University of Vitaco. So I will give the free version, and then later we will also use Python, which is also the open session, right? So this is all from my side. So I will really thankful to Bim Park and also for arranging this webinar. And it was really nice talking to all of you, right? So no more questions, then this is it from my side. Thank you so much, Dr. Abubakar sir, for sparing your time and giving this webinar. We will also be having a Vika webinar, inshallah, on 22nd of January, inshallah. So we will also announce that webinar. So you will also learn some basics about Vika. And then later on, inshallah, with Dr. Abubakar, you can have a detailed session, inshallah. Okay. Thank you very much. Thank you Okay. so much. Thank Assalamu you. alaikum. Thank you. Okay. Thank you Allah so much. Hafiz. Assalamu alaikum.